Hello children, how are you today? Welcome to the English Literature video classes. We have finished our first lesson of PA2, that is the travel stories, and we had read the double consonant phonics, and what else? We did antonyms, and then we did the story of Gulliver. And then what else we did? We have done the poem of On a Ship, right? Ship a sailing, right? So now we will first do the worksheet of the same lesson, and then we will proceed to the next chapter. So I hope you all have got your worksheets for English literature. So chapter 6 का हम पहले वर्कशीट करेंगे and then we will move on to chapter 7. साथ साथ में वर्कशीट करेंगे, राइट? टर्म 1 में भी हमने ऐसे ही किया था. सो सिमिलरली अभी भी हम ऐसा ही करने वाले हैं. सो प्लीज टेक योर वर्कशीट्स and write down the date. And here what we have? We have unseen passage first. So we will do the unseen passage. Let's read it out. Penguins are a group of aquatic flightless birds living mostly in Antarctica. What is flightless? Flightless क्या होता है? The meaning of flightless is जो उड़ नहीं सकता. The birds which cannot fly is flightless. Flightless birds who cannot fly. Right, so birds that cannot fly are the flightless birds. And penguins are one of those. Can you name some more flightless birds? Just think of some more flightless birds. What are they? Do you have any idea? Any idea? There are so many birds around you which are flightless. Have you ever noticed them? For example, hen, rooster or cock, all of them are flightless bird. They cannot fly, right? Do the hens fly? Do the rooster fly? No, right? So they are flightless birds. What else? Duck. Duck also. Can the duck fly? Duck does not fly, right? They swim in water. So they are also flightless bird. And what else? Goose also. Goose and geese, they also cannot fly, right? So all these are the categories of flightless birds. So what are they? The group of aquatic. What is aquatic? Aquatic means living near or around water or in the water. जो वाटर के पास मिलेंगे ऐसे वाले बर्ड्स आर एक्वेटिक फ्लाइटलेस बर्ड्स. दैट इज पानी के पास मिलने वाले बर्ड्स जो उड़ नहीं सकते, राइट? ओके, नाउ हाउ डू दे लुक? पेंगुइन्स हैव डार्क एंड वाइट फेदर्स. सो दे हैव डार्क एंड वाइट फेदर्स. पीछे के साइड ब्लैक होता है एंड उनकी पेट पे वाइट होता है, राइट? सो दिस आर they have dark and white feathers. They have flippers for movement in water. Penguins के पैर देखना आप बहुत डिफरेंट होते हैं बाकी बर्ड्स से अलग. जैसे डक्स के होते हैं, देखना उनके पैर ऐसे होते हैं, राइट? सो व्हाट आर दिस? दिस आर कॉल्ड flippers. अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे पेंगुइन्स
तो आप देख सकते हो कि उनका पैर जो है बहुत डिफरेंट होता है. क्यों? क्योंकि उनको बिकॉज दे आर एक्वेटिक बर्ड्स, सो दे कैन स्विम इन वाटर. जैसे डक्स के पैर होते हैं एंड गूस के बड़े वाले डक्स के होते हैं, वैसे ही इनके भी पैर होते हैं बहुत डिफरेंट, राइट. सो दे कैन swim in water, move in water. Most penguins feed on fish, squid and other forms of sea life caught while swimming underwater. ज़्यादातर जो penguins होते हैं, what do? They feed on fish, squid and other forms of sea life. That is, वो क्या खाते हैं? They eat fish, squid. What is squid? Squid जो है वो इतने छोटे छोटे स्नेल्स के जैसे वो जीव होते हैं, स्पीशीज होते हैं जो पानी में मिलते हैं. ऐसे गोल गोल होते हैं वो, स्नेल्स के जैसे. एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सी लाइफ जो समुद्र में रहने वाले दूसरे प्राणी होते हैं छोटे छोटे, उनको वो खाते हैं. दे स्पेंड हाफ ऑफ देयर लाइफ ऑन लैंड एंड हाफ इन द ओशंस. क्या होता है? पेंगुइन्स की जितनी भी लाइफ होती है ना, जितने भी साल वो जीते हैं, उसका आधा लाइफ वो ज़मीन पे रहते हैं एंड आधा लाइफ वो ओशियंस में रहते हैं. ओशियंस मतलब महासागर. जैसे कि what are different oceans? Pacific Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, Antarctic Ocean, right? See, अंटार्कटिका में मोस्टली पाए जाते हैं, तो उनको सबसे नज़दीकी वाला ओशन कौन सा होता है? अंटार्कटिक ओशन होता है. So what happens? They spend half of their life on land and half of life in oceans. Emperor penguins are the largest living species and the blue or fairy penguins are the smallest species. मतलब penguins में भी different species होते हैं. जैसे whales में होते हैं ना, blue whale, white whale, right? Tiger whale. Similarly penguins में भी different species होते हैं. एम्परर वाले जो पेंगुइन्स, जो एम्परर पेंगुइन्स होते हैं, दैट मीन्स द किंग वन, उसके ऑर्डर्स सब फॉलो करते हैं, आर द लार्जेस्ट लिविंग स्पीसीज. मतलब वो पेंगुइन्स में सबसे बड़ा होता है. एंड द ब्लू और फेरी पेंगुइन्स आर द स्मॉलेस्ट स्पीसीज. और जो ब्लू या फिर फेरी स्पीसीज के पेंगुइन्स होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं. मोस्ट ऑफ द पेंगुइन स्पीसीज लिव इन लार्ज कॉलोनीज. क्या होता है? पेंगुइन्स की जो स्पीसीज होती है वो लार्ज कॉलोनीज बना के रहती है. मतलब एक उनकी कॉलोनी अलग से होती है और सारा झुंड एक साथ रहता है, अलग अलग कोई नहीं रहता. पेंगुइन्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ ह्यूमन बींग्स. पेंगुइन्स जो हैं वो इंसानों से डरते नहीं हैं. दे आर वेरी फ्रेंडली टू ह्यूमन बींग्स. This is probably because penguins have no land enemy in Antarctica. Because इसका रीज़न ये हो सकता है कि पेंगुइन्स का कोई भी एनिमी नहीं है लैंड पे, अंटार्कटिका में. Instead, they are at a risk in sea from sharks और leopard seal. सील भी एक तरीके का पानी वाला जानवर होता है, और जो पेंगुइन्स होते हैं उनको सील्स और शार्क से खतरा होता है. In 1986, Silvio Mazzola created a famous penguin cartoon character named Pingu. यहाँ पर O ऐड कर दो, Pingu. 1986 में सिल्वियो मज़ोला नाम के एक पर्सन ने बहुत ही फेमस पेंगुइन्स के ऊपर कार्टून कैरेक्टर बनाया था, नेम्ड पिंगू. इफ यू सर्च गूगल पिंगू लिखोगे तो इट विल शो द कार्टून्स ऑन पिंगू, राइट? So if you want to see the cartoon, you have to search it out on either Google or YouTube. If possible, and if I find the cartoon, maybe I can share it to you if you are interested to see it,
right? So now we have to answer the questions related to the passage. अभी तक तो आप फेमिलियर हो गए होंगे कि पैसेज आंसरिंग कैसे करना है. चलो, let's start doing it. Shall we? Shall we start? Okay. Now, tick the correct option. Penguins mostly live in Arctic or Antarctica. So, what is it? They live in Antarctica, right? So, the right option is Antarctica. Done? Shall we move to the next question? Chalo, let's do it. The largest living species are emperor penguins, fairy penguins. See, we studied over here. Emperor penguins are the largest living species, right? And fairy penguins kya hai? Smallest. So the answer to question number 2 is A. The emperor penguins are the largest living species. The cartoon character created by, number 3. The cartoon character created by Silvio Mazzola was, so what was the cartoon character created by Silvio Mazzola? It was Pingu, right? So the answer is option B, Pingu. Done? Shall we move to the next question? Chalo, let's move. What are penguins? Penguins क्या होते हैं? What are penguins? See, penguins are a group of aquatic flightless birds living mostly in Antarctica. So what are penguins? Penguins are, let's write. Penguins are a group of aquatic flightless birds living mostly in Antarctica. Right? Chalo. Shall we move to the next question? Okay. Where do they spend their life? They spend their life. Where do they spend their life? They spend their half life on land and half in the ocean. Isn't it? See, their life on land and half in the oceans. So the answer is they spend their half life on land and half in the oceans. Right? Done? Shall we move to the next question? Chalo, let's move. Why are the penguins not afraid of human beings? Number 3. Why are the penguins not afraid?
Because penguins have no land enemy in Antarctica. The penguins are not afraid of, or else we can write, so what will be the answer? As the penguins do not have any land enemy in Antarctica. What will be the answer? As the penguins do not have any land enemy in Antarctica. Right? So they are not afraid of human beings. Done? Chalo, next question. Now, question number 3 is you have to write the opposites. You have to write the opposites of the given words which is mentioned in the passage. So, bright ka opposite can be dark, right? They have dark feathers, है ना? So, bright ka opposite is dark. D-A-R-K, dark. Largest ka opposite is smallest, right? Emperor penguin is the largest and fairy penguin is the smallest, right? So largest ka opposite is smallest. Done? Finished? Chalo, let's move to question number 4. We have to write the meanings of. Meaning of eat. Passage में है ना, the penguins feed on fish, squid and other sea animals, sea creatures. So eat का meaning is feed. F-E-E-D, feed. And then fear of. The meaning of fear of. We can see in the passage, they are not afraid of humans, right? So they do not have fear from human beings. So fear of ka meaning is afraid of. A-F-R-A-I-D, afraid of. They are not afraid of. Now number 5. Circle all the nouns from the passage. What is a noun? Noun is a naming word, right? So passage में जो भी naming words है, you have to circle that. And number 6 is fill in the missing letters. So how can we fill this? This can be penguin, right? How do we spell it? P-E-N, peng, pen, G-U-I-N, penguin. Right? And what is B number? B can be colonies because penguins live in colonies, right? C-O-L-O-N-I-E-S, colonies. So all these things are in the passage itself. So that is all for today. In the next class, we will do unseen passage 2.